everyone, welcome back to my channel Bolia Sharma ji, and if you are new to this channel please do hit the subscribe button. And मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था अपने चैनल का एंड लुक्स लाइक 84% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट एंटिसिपेटेड और रैदर ऐसा टॉपिक जिसके लिए सारे इमिग्रेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। So today in this video I'll be talking about anything and everything related to green card process for United States. So in this video I'll talk about a couple of different topics all the way starting from कि green card exactly होता क्या है। I know बहुत लोगों को पता होगा but just for the educational purpose I'll cover that quickly. उसके बाद what are the ways that you can get a US green card. So there are like different ways, तो वो भी मैं cover करूँगा। And then I'll cover the employment based जो green card का process होता है, because I'm very much familiar, I had gone through that process recently, तो I'll cover that as well. And then I'll also cover the timelines और process के अंदर क्या क्या होता है as part of the employment based, क्योंकि मुझे उसी के बारे में पता है, so I can talk about that easily. And then I'll talk about my green card process updates, जो कि अच्छा है but still बहुत लंबा होने वाला है। So I'll talk about my green card updates and towards the end I'll try to talk about couple of advantages just of an approved green card which is called as I-140 वाला process हो गया है and approve हो गया है। So I'll talk about that too. So let's start the video now. So what exactly is a green card? As the name says, वो green color का होता है। No, I'm just joking actually वो ग्रीन कलर का होता है दिखने में एंड देयर हैज़ बीन इन हिस्ट्री की ओवर द पास्ट आई वुड से 70-80 ईयर्स का कलर चेंज हुआ है। बट एकदम सीधा बोलूँ तो ग्रीन कार्ड इज़ बेसिकली द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और अदर मोर लाइक एन इमिग्रेंट वीज़ा। वीज़ा इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड बट आई विल स्टिक टू दैट बिकॉज हम सब वीज़ा पे हैं। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन US ऑन एन H-1B दैट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। बट ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो दैट बेसिकली इंश्योर्स दैट कि यू कैन लिव लॉफुली in United States and work within United States freely. So basically you can take up any job, live up anywhere in US, and you can go out and come inside the US anytime. And I think after like 3 to 5 years you become eligible to take up US citizenship as well. So that's a very gist and overview of green card. बहुत से लोगों ने कनाडा का PR प्रोसेस सुना होगा, दैट्स परमानेंट रेसिडेंसी। सो इट्स इक्वलेंट टू दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स कॉल्ड ग्रीन कार्ड, GC might be the word that you have heard from many of your friends. तो ये तो हो गया व्हाट इज़ ग्रीन कार्ड, बट मिलता कैसे है ग्रीन कार्ड? तो इसके बहुत से तरीके हैं, आई थिंक 5 तरीके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे यू कैन गेट योर ग्रीन कार्ड। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड प्रॉब्ली द ईजिएस्ट इज़ फैमिली बेस्ड, और उससे भी ज़्यादा आसान इज़ मैरिज। तो अगर आप किसी करेंट ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करते हैं सो यू कैन गेट अ ग्रीन कार्ड ईजिली. And then if you have your immediate family members, they can sponsor your green card. So in that case, it has to be your blood relationship and dependent. So like if your parents have a green card, they can sponsor your green card. उसमें भी clause है कि I think certain age तक ही they can sponsor and it has to be like unmarried. But बहुत से clause होते हैं उसमें. But comparatively, marriage and family based is the first one and probably the most easiest amongst all of them. So the second is asylum based. So let's say if you're coming from a country जहाँ बहुत violence हुआ है and बहुत problems हुई हैं, so you can seek asylum and refuge in United States. So उसकी एक category होती है. Then connected to that is another category in which let's say if you have been faced some kind of a domestic violence or abuse within United States, so you can also file for a green card as part of that process. So उसका थोड़ा अलग process होता है but it's comparatively a little different than a typical process जिसमें आपको बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, जो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी इज अ डाइवर्सिटी वीज़ा. सो इन दिस केस what happens, United States as it's a country made by immigrants, so comparatively immigrant friendly है but Canada को कोई बीट नहीं कर सकता. So US has this visa category or rather green card का category which is called as diversity visa. So जो देश जहाँ से बहुत कम लोग immigrate करते हैं to United States, it has certain reserved number of visas that are issued every year. Again, it's a lottery system. But let's say if you are from a country, for example in this case could be Nepal or a smaller country जहाँ से बहुत कम लोग US आते हैं, तो उस कंट्री के अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर अ डाइवर्सिटी
based lottery, and I'll put a link in the description in which you can check your eligibility if your country is eligible. इंडिया नहीं है उसमें, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग इमिग्रेट करते हैं डिफरेंट वीज़ाज पे, तो इट्स नॉट इन दैट केस. So the next way to get your green card is via investment. So that category is called as EB5, and in that category, let's say if you invest a certain amount within United States, generate income and job for the current citizens and जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, and then you will be eligible to become like a permanent resident, and एक special category होती है जो कि EB5 बोलते हैं, तो वो अलग एक process है उसका. And the last and probably जिसके बारे में I'll go into detail because I know that very well, having gone through that process myself. It's a employment based green card process. उसके अंदर भी different categories होती है. It's EB1, EB2 and EB3. So उसके बारे में भी I'll talk about in that differently. But as part of that, gist is कि अगर आपका employer can sponsor your green card, that category basically falls under your employment. तो उसके अंदर you have to have an employment with a current company. They have to file your paperwork and थोड़ा लंबा process होता है. तो that's probably the another way. और इसके अलावा थोड़े बहुत और ways हैं जिसके थ्रू green card मिल सकता है. But these are the major 5 categories by which you can get your green card for United States. So now talking about the EB1 category, which is the first category as part of your employment based green card. EB1 is the extraordinary ability वाले लोगों के लिए green card. So as the description has it, so basically if you have like won some great prizes, like if you have some Olympic medals, if you have like several research paper, patents, and then even if you are a manager or a person who had like a significant position in your organization, then EB1 is the category in which you can get your green card approved. And it's probably the most I would say the category which currently has a very less waiting time. So I'll also talk about the current wait time जो कि USCIS हर मंथ पब्लिश करता है as part of their visa bulletin कि currently कौन से ईयर का प्रोसेसिंग हो रहा है. So as part of that EB1 mostly हर मतलब 1 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा. But you need to have some extraordinary ability. I'll again put the link in the description जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं EB1, EB2 और EB3 के बीच का डिफरेंस. So the next category is EB2 and जिसमें मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस फाइल हो गया, अप्रूव हुआ है. It's for the advanced degree holders. So in that basically you need to have a master's degree or a PhD holder, or at least have some specialized skills and knowledge in a particular section, and you need to have certain years of experience which should be certified by your past employer saying that कि भाई इसने ये काम किया है and इसको ये आता है. You need to provide your transcripts and all other supporting documents saying that you have an advanced degrees and एक special skill set है आपके पास. So that's for EB2 category. And the next category is EB3, that is a skilled worker वाला green card का category. So in that you don't need to have an advanced degree. So अगर आपके पास bachelor's degree है, so that should work. But you need to have some kind of a degree and other supporting documents to be eligible for EB3. And definitely for EB1, EB2 and EB3 you need to have a employer who is ready to sponsor your green card, क्योंकि as the name says it's an employment based green card process. So the next category of green card is called as EB4, and that's a special immigrant category. So basically अगर आप एक religious leader हैं and if you're part of a special organization like NATO, IMF, तो आप इस वीज़ा के लिए eligible हैं. So again there are different processes and I believe there's also provision for if you are an Iraqi or a Afghani translator, तो इस category में fall करते हैं. As the name says it's for special immigrants जो कि अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो एंड रीड अबाउट ऑल द कैटेगरीज EB1, 2, 3, 4 एंड इवन 5 जो मैंने पहले बोला उसके बारे में भी, जो कि इन्वेस्टमेंट वाला होता है. डीप डाइव इनटू की टाइमलाइन क्या होती है, प्रोसेस में क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत कुछ होता है. तो आई विल कवर दैट फॉर EB2 बिकॉज मेरा वो प्रोसेस था. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड आई विल टॉक अबाउट माई ग्रीन कार्ड अपडेट एंड एग्जैक्टली क्या हुआ है. तो मुझे बताते हुए